guys, I'm Preeti and welcome back to my channel PreetDlife. So in today's vlog, I'll be showing you something very basic. तो हम इंडियंस बहुत ही जुगाड़ू होते हैं, ये सबको पता है. तो हमारे घर पे जब खाना बच जाता है तो हमने बचपन से देखा है कि हमारे पेरेंट्स हमारी मम्मी लोग उसका कुछ ना कुछ यूज़ कर ही लेती हैं. तो हमारे घर पे भी कुछ ऐसे ही हुआ. कल हमने रात को पनीर भुर्जी बनाई थी और हम थोड़ा ज़्यादा ही बनाते हैं बिकॉज नॉर्मली वी मेक वंस और उसको कम से कम 2 बार तो खाते हैं. एनीवेज, तो ये पनीर भुर्जी ज़्यादा बनी थी और दोबारा मुझे फिर से उसको पनीर भुर्जी को राइस और दाल या रोटी के साथ खाने का मन नहीं था. तो मैंने सोचा इस लेफ्ट ओवर का क्या करें. सो मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो मैं सैंडविच बना लूँ या मैं पनीर के पराठे बना लूँ. So yes, in this vlog I'll be showing you what I did with my leftover paneer bhurji. Yes, I made parathas of it. I don't think that it is unhealthy. It is a very healthy breakfast or lunch option. It is also good for babies. अगर आप कोई diet plan follow कर रहे हैं या if you will see बहुत सारे videos आते हैं, they'll give you options to eat. उसमें पनीर का पराठा या सैंडविच इज हेल्दी. इज जस्ट दैट कि आप आटा के बदले रागी या बाजरा यूज कर. एनीवेज, तो मैंने प्रीशू के लिए भी उसी पनीर का पराठा बनाया है और बस उसको थोड़ा और हेल्दी बनाने के लिए मैंने उसमें थोड़े से गाजर ग्रेट कर दिए. बाकी मैंने कैप्सिकम पहले से डाला था और पनीर तो बहुत हेल्दी होता ही है. एंड हाँ, मैं उसके लिए जो भी बनाती हूँ आई प्रेफर मेकिंग इट इन घी. तो उसके लिए मैंने घी में बनाया है और अपने लिए ऑलिव ऑयल में बनाया है. सो यस, let's get started and see how I make my leftover paneer bhurji paratha. Take me to the bay. I wanna watch as all my thoughts are carried in the waves. Lift me to the sun. I'll see the world upon your shoulders like when I was young. Days are gone, but I remember still, so they live on. As long as I know what's wrong and what is right, as long as I know how to love and how to fight, you'll always be a part of me, no matter how I get to be, no matter how grown up to you I seem, I'll always be a little girl. वैसे मैं अपने पराठों में स्टफिंग थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बट अगर आप चाहते हैं कि पराठे बेलते टाइम ना फटे तो आप स्टफिंग थोड़ा कम कर सकते हैं. विशु, क्या कर रहे हैं आप? आपको खाना बनाना है मम्मा के साथ? हाँ, यू वांट टू कुक? ए हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है. जाइए जल्दी आप भी बनाइए एंड लेट मी नो हाउ दिस पनीर भुर्जी पराठा वर्कड फॉर यू गाइस. प्रीशु, वेट. तो ब्रेकफास्ट हो गया हमारा एंड इट वाज एन हेल्दी ऑप्शन एंड वेरी फिलिंग ऑल्सो. तो इनफैक्ट अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो ये पनीर पराठा एंड दीज थिंग्स आर वेरी हेल्दी बिकॉज ये बहुत देर तक आपको फिल रखते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग भी नहीं करते हैं. ये मैंने देखा था किसी वेट लॉस वीडियो में. एनीवेज, so if you're new to my channel, please consider subscribing it and also don't forget to hit the bell icon so that you don't miss any update. If you like the video, please give a thumbs up. Thank you. See you again in my next vlog. Bye bye.